अमेरिकी कांग्रेस को एड्रेस करना है, तब प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में न्यूयॉर्क आने का भी कार्यक्रम अपना तय कर लिया था। तो ये बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री की कि अब प्रधानमंत्री की खासियत ही यही है कि अगर दुनिया के शासनाध्यक्षों की पसंद नापसंद का ही बहुत ख्याल रखते हैं, तो अगर तोहफा मिलता है तो उनकी पसंद का तोहफा देने में भी पीछे नहीं रहते। अगर आपको बता दूं, जब ओबामा से मिलने आए थे तो उनको मार्टिन लूथर किंग जूनियर और दूसरा महात्मा गांधी की भागवत गीता, दो किताबें उनको गिफ्ट की थी उन्होंने ओबामा को। और जब ओबामा के चले साथ साथ एक बहुत बड़ा नारा दिया था भारत अमेरिका ने। तो भारतीय अमेरिका के संबंधों को और मजबूत करने में, भारत का पक्ष और मजबूती से रखने में प्रधानमंत्री काफ़ी आगे रहे हैं। और अमेरिका के साथ उनके अच्छे संबंध हो, राष्ट्रपति ओबामा के साथ उनके अच्छे व्यक्तिगत संबंध भी थे। अब राष्ट्रपति बिडेन ने उनको जब डिनर पे बुलाया है तो ये भी दिखाता है कि अब कितनी बढ़ती ताकत है भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में वो उभरा है। कोरोना के समय भारत ने सबसे पहले दवाइयाँ बनाई थी, टीके बनाए, इसके लिए दुनिया भर के देशों को सप्लाई किया। भारत के अपने लोगों को काफ़ी लाइफ सेवर रहा कोरोना के समय। उस समय अर्थव्यवस्था भारत की इकोनॉमिक आर्थिक डोज देकर भारत की काफ़ी मदद की। भारत की इंडस्ट्री को, भारत के उद्योग धंधों को, भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर होने से बची पोस्ट कोरोना पीरियड में। और कोरोना के बाद तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला भारत एकमात्र देश है जहां अब माना जा रहा है, जहां की ग्रोथ रेट सारे जो रेटिंग एजेंसीज उन्होंने 6 से ज़्यादा, भारत की 6.77 तक ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। तो अब भारत बदल रहा है और इसी बदलते भारत और ताकतवर हो रहे भारत की तस्वीर दुनिया के सामने प्रधानमंत्री मोदी पेश कर रहे हैं। और भारत एक ब्रांड इंडिया के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और यही प्रधानमंत्री आज भी अब सबके साथ योग करेंगे तो यही संदेश दुनिया भर के देशों को जाएगा। और देखिए, प्रधानमंत्री को खुद देखिए, वेव करते हुए लोगों को निकल रहे हैं आगे से। और हर शख्स जो यहाँ सुबह सुबह पहुँचा है, अमेरिकी समय अनुसार अभी 8-8:15 का समय हो रहा है, तो हर शख्स जो यहाँ पहुँचा है योग करने का समय ही सुबह का समय होता है। जब आप जब सोकर उठते हो उस समय आप फ्रेश होते हो और उस समय योग करने का समय होता है। इसलिए प्रधानमंत्री भी अब होटल से यहाँ पहुंचकर अब योग करेंगे और सुरक्षा घेरे से जुड़ते हुए वो मंच पे पहुंच रहे हैं। आगे की तस्वीरें जब दिखेंगी, जब पूरा 1 घंटा यहाँ पर योग का कार्यक्रम चलेगा। योग में जितने भी आसन हैं यहाँ मैं आपको बता दूं, योग के जितने भी आसन हैं यहाँ पर लोग तैयार हैं, अपने मैट्स पे तैयार हैं। लोग जानते हैं स्टे फिट और स्टे हेल्दी का जो प्रधानमंत्री का मंत्र है वो भी काफ़ी कारगर साबित होता है। इसमें योग काफ़ी मददगार साबित होता है। योग कि इसी मददगार साबित होने में और इसी योग दिवस देखिए प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं। 9वां अंतर्राष्ट्रीय Excellencies, distinguished participants, yoga masters, brothers and sisters, all of those watching on web TV and joining us today, Namaste. A very warm welcome to everyone. Happy International Day of Yoga 2023. This is the time that we've all been waiting for. The time has come for me to share how much we're deeply honored. We're so privileged to have with us today none other than the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. A distinguished world leader and an ardent yoga practitioner. I'd like to remind everyone that it is Prime Minister Modi ji himself back in December 2014 who introduced the idea of establishing World Yoga Day to the UN General Assembly. A record number of 175 member states recognized yoga's universal appeal and adopted the landmark resolution proclaiming June 21 as International Yoga Day, the day of the summer solstice here in the north.
So every 21 of June is World Yoga Day. This day provides people everywhere across the globe, all of us and everyone watching, an opportunity to reflect upon the countless benefits of practicing आवाज आ रही है, आवाज आ रही है. indeed an invaluable gift to the world from India's ancient tradition. We thank the Honorable Prime Minister of India for this notable initiative, which is now celebrated worldwide with enthusiasm and vigor. I will now begin the official part of today's event by requesting Ambassador Ruchira Kamboj, India's permanent representative to the United Nations, to the stage to deliver her opening remarks. ये कोई पूछ रहे, हमको नहीं पता, काट लिया होगा. Mr. Mayor, distinguished ambassadors, distinguished guests, and all my dear friends and colleagues from this wonderful audience. Today's celebration is indeed very, very special. Prime Minister Narendra Modi will lead us in doing yoga here at the United Nations Rome. To put matters in perspective, it was under his leadership and under his guidance that 21st June was declared as International Yoga Day. And it is only fitting, therefore, that the inspiration behind the idea is with us today in the scenic, multicultural setting of the United Nations. Ladies and gentlemen, it is truly beautiful to see so many around the world gather in solidarity. Back up, Pankaj. It is not living with the burden of weight or uniting us. It is a choice made with balance, an idiosyncratic beauty, timeless throughout the progress of humanity. Yoga has a truth. Its truth beyond articulation, wisdom beyond time. I hope all of you will cherish 21st June this year and hold it close to your hearts, today and forever. Thank you. Thank you, Ambassador Kamboj, for your remarks. It's my turn now to invite the Honorable President, Mr. Chana Karashi, for the stage. बोला चालू करना है. देखिए देखिए जिन्होंने भी यहाँ पर जो भी बयान देने आ रहे हैं, अभी रुचिरा काम्बोज को आपने सुना. रुचिरा काम्बोज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, भारत की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है और उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है इस पूरे चीज़ों को मैनेज करने में, हर चीज़ों को देखने में यहाँ पर. और उन्होंने भी बात की और यूनाइटेड नेशन से जुड़े लोग यहाँ भाषण दे रहे हैं, सब प्राचीन भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं. तो मैं आपको बता दूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये ईसा पूर्व 2री शताब्दी में पतंजलि के सूत्र, उसमें योग सूत्र आए थे. पतंजलि का महाभाष्य है. पतंजलि एक उस समय के लेखक हुआ करते थे. उनके लेखों में उनके योग सूत्र का जिक्र है. पाणिनि जो भारत के इतिहास में पहली बार ग्रामर जिसे कहा जाए भारतीय भाषा का, पाणिनि के ग्रामर में योग का जिक्र है. तो ये योग जो है, योग का स्कूल जो है, ये सदियों पुराना है. सैकड़ों वर्ष ईसा पूर्व प्राचीन भारत के इतिहास का एक हिस्सा है. उसके पहले भी लोग यहाँ पर योगी हुआ करते थे, हठ योगी हुआ करते थे. लेकिन ये जो योग है ये अनूठा है, जिसका पहली बार जिक्र ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ था. और सबसे खास बात इसकी है कि ये जो 8 हिस्सों में इस योग को बांटा हुआ था, इन 8 हिस्सों में सबसे by the same law, a desire to achieve balance. Yoga changes our physical performance. But more importantly, it can spark in us different mental and intellectual performance. With a control that it teaches over ourselves, we learn how to make change and impact. Since that university lecture, I've been an admirer of yoga.
I'm very proud of my daughter, who has already reached a high level of practice and is continuing her journey. Thanks to her, I understand better yoga's ethical guide. The guide, which includes the principle of non-stealing, non-greed, non-hoarding, and non-violence. In other words, yoga's ethical guide to living is a guide to sustainability, not overusing resources that belong to all of us, not prioritizing short-term gains over planetary boundaries, and working for transformation. Our world needs balance, self-control, and creativity, just as it needs recognition of moral responsibilities and cherishing peace and justice. There are many ways to approach these aims. Yoga is one of the means, for which I have a special respect. I'm happy to be here with all of you today, but let me apologize in advance. I am not a yoga practitioner, and the positions which you will show might look very different from what I end up doing. Still, I'm here with an open heart and open mind. Thank you very much. Thank you, President Karoshi, for highlighting the transformative power of yoga and in such a very personal way. At this time, I would now ask that Mayor Eric Adams, the mayor of the city of New York, please take the stage. To Prime Minister Modi, to President of the General Assembly, to Deputy Secretary General, to Your Excellencies, to the Ambassador, to all of you, do not miss the significance of this moment. New York City is the largest and most important city in America. As I stand before you as the mayor of that city, I share with you in a clear and a universal tone that we are no longer focused solely on the physical body, but the anatomy of our spirit. For far too long, we have separated what our needs are emotionally, spiritually, and physically. We are going to go to the root causes of that which troubles many of us, from how we interact, to the food we eat, to allowing our children to have breathing exercises in the morning as they start their school day, to challenge the mental health issues that's impacting us. But there's a larger challenge for all of us. What we do on the mat in practicing yoga must become what we do on the streets and in our countries. We cannot become universally connected through the yellow mats we lay on, but disconnected as we move through our communities. Use the spirit and emotions of yoga to challenge and fight against war, to fight against gender oppression, to fight against violence, to fight against the lack of clean water, to fight against the food insecurity, to fight against the destruction of our planet. Our connectivity is not only how we're connected to our families and our parents. We have two mothers. One gave birth to us and one sustains us. Yoga keeps us connected to both mothers and connected to each other. This International Yoga Day is an international call for us to stand up for humankind across the globe and all living beings. I'm proud to be here, and I'm proud to symbolically represent this city as stating the International Yoga Day is an international call that we will be a leader here in New York City, as you are a leader in your own environments.
Thank you for allowing me to rejoice with you today. Thank you, Mayor Adams, for spotlighting how yoga is integral to the anatomy of one's spirit. We appreciate that perspective and input. I'd like now to go to the video message of the UN Secretary General Antonio Guterres, who is not available to be with us in person, but is here in spirit. Please let us go to the videotape. Happy International Day of Yoga. I want to recognize Prime Minister Modi for all he has done to promote understanding of yoga and its many benefits. Yoga unites. It unites body and mind, humanity and nature, and millions of people across the globe for whom it is a source of strength, harmony and peace. In a dangerous and divided world, the benefits of this ancient practice are particularly precious. Yoga offers a haven of calm. It can reduce anxiety and promote mental well-being. It helps us to develop discipline and patience. It connects us to our planet, which so badly needs our protection. And it reveals our common humanity, helping us to understand that despite our differences, we are one. On this International Day of Yoga, let us embrace the spirit of unity and resolve to build a better, more harmonious world for people, planet, and ourselves. Friends, it is one of the deepest honors and privileges of my life to extend a heartfelt welcome. A heartfelt welcome and an invitation to no one else but the Honorable Prime Minister of India, Modi ji. I ask that on this auspicious occasion that he join us and that he address us with his remarks. Let us give him a very, very warm welcome. Thank you. Your Excellency, Chaba Koroshi, President of UN General Assembly, Her Excellency Amina Mohammed, Deputy Secretary General of the Union, His Excellency Eric Adams, Mayor of New York, and my dear friends from all over the world. Namaskar. Friends, on this fine morning, we are gathered here at the United Nations, at the meeting point of entire humanity. In this wonderful city of New York, I know many of you have come here from far away. Most of you have woken up before sunrise and made the effort to come here. I am delighted to see you all, and I thank you all for coming. Friends, I am told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose
celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. I've just paid respect to the brave UN peacekeepers. In 2015, I had called for a new memorial to be built at the UN in their memory. And last week, the whole world joined hands with India to make this reality soon. As the largest troop contributing nation, we are grateful to all nations for their expression of support to this noble cause. Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They promote holistic health and are good for environment too. And today, it is wonderful to see the entire world come together again for yoga. Friends, yoga comes from India, and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender, and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home or at work or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths, and for all cultures. Yoga is truly universal. Friends, when we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. I am delighted that many of you are working on scientifically validating different aspects of yoga. Indeed, this is the way. Friends, I know you are all keen to get started. Well, so am I. I want to thank the United Nations for hosting us here today. I am grateful to the Mayor and the City of New York for all their help and support in making this event success. And most of all, want to thank you all once again for being here today. Let us use
the power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves and to each others. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. Thank you. Thank you, Prime Minister Modi ji, for conveying such an inspirational message to us, for elaborating more about our theme, Vasudeva Kutumbakam, and stressing how yoga is really a way of life. At this time, I request that our esteemed dignitaries please leave the stage and join us below for the yoga lesson, because we would like to start that soon. You may Friends, I'm now going to call upon yoga instructor Miss Annalise Richmond so that she can join on the stage. Quickly. We're going to prepare the stage so that we can get it ready for our yoga lesson. I've mentioned before that we'll have 6 energetic youngsters leading us along with Miss Annalise Richmond in this lesson. And we have more in the first row here on the north lawn joining us so that people behind can also follow that way too. I'm requesting that everyone stay on your yoga mat in your spot and to follow our yoga instructor and our yoga practitioners to the best of our ability. It's such a beautiful morning to have this opportunity to engage in yoga. The sun is not so strong, and we have a nice breeze coming through, which makes for a very pleasant morning for us to all share in this collective group. I'm delighted now to hand over the floor to our को उन्होंने अपने संस्कृत की भाषा में सर्वे सुखिना भवंतु की बात की। उन्होंने कहा कि सब लोग खुश रहें और सब लोग स्वस्थ रहें। ये प्रधानमंत्री ने इन दो लाइनों के साथ अपना भाषण समाप्त किया था। और यही सबसे बड़ी बात है कि जो वो भारत में संदेश देते रहते हैं कि फिट रहो, स्वस्थ रहो। यही यहाँ भी उन्होंने कहा कि दुनिया में हर कोई स्वस्थ रहे, दुनिया में हर कोई खुश रहे, यही उनकी कामना है। और ये योग जो है ये इन दोनों चीजों को दिखाता है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को योग करते हुए, उस भीड़ में प्रधानमंत्री हिस्सा बन चुके हैं और योग करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। आपको ऐसा ही योग करते प्रधानमंत्री योग गुरु मंच पे बैठे हैं काफी सारे, और वही बताएंगे 1 घंटे में जो भी वो योग ये मुद्राएं करेंगे वही सामने की पूरी जनता दोहराएगी। पूरी की पूरी तस्वीरें साफ हैं। इसके बारे में बताया भी जा रहा है कि कौन सा योग किस समय किया जा रहा है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि योग के बहुत ज़्यादा योग का जो प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ योग है, इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है सेल्फ कंट्रोल, जिसे योग की भाषा में जो पतंजलि का
का योग शास्त्र है उसमें साफ साफ लिखा था ये सेल्फ कंट्रोल, ये प्रैक्टिस होती है जिसमें नॉन वायलेंस भी आता है, सच बोलना भी आता है, चोरी नहीं करना, इज्जत के साथ रहना, मतलब बुरी चीज़ों को अवॉइड करना। ये सेल्फ कंट्रोल का बहुत बड़ा हिस्सा है जो योग दिलाता है। दूसरी ये जो ओम का नारा है, ओम जो कहना है, ओम मन को मानसिक शांति देता है, इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए, माइंड को कंट्रोल करने के लिए ये ओम बहुत ज़रूरी होता है। तो सेल्फ कंट्रोल के बाद जो नियम है, जो ऑब्जर्वेंस है, उसका एक बड़ा हिस्सा ओम होता है, जिससे आत्मा पे जिस सेल्फ कंट्रोल से प्योरिटी आती है, आत्मा स्वच्छ रहती है इस ओम से, इससे सादगी आती है। और ओम वेद का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, डिवोशन भगवान के प्रति आदर देने का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ओम रहा है। तो ओम सिर्फ एक धर्म या किसी जाति और संप्रदाय का प्रतीक नहीं है, ओम आत्मा को भगवान से जोड़ने का प्रतीक माना जाता है। यही योग का एक बहुत बड़ा नियम है, यही चीजें यहाँ से संदेश प्रधानमंत्री देते हैं। आप टीवी 18 से हैं जी। आपका नाम? अमिताभ सिन्हा। अच्छा, मेरा नाम नीरज है, मैं नीतीश का बड़ा भाई हूँ। अरे बैठिए, अरे हम लोग मिले थे हॉस्पिटल में। अरे मैं वही देख रहा था आपको उतनी देर से। बैठो सर। नहीं बस ठीक है। अब यही पोस्टेड हो? हाँ, मैं यही पोस्टेड हूँ। अरे बाबा रे, मुझे लग रहा था, मैं बार बार मुड़ के देख रहा था लेकिन लाइव में था ना तो दिमाग नहीं लगा। नहीं, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आप छोटे भाई की तरह। Let's relax our hands in our lap. And when you feel ready, you can gently open your eyes. We'll start our yoga sadhana, or yoga practice, with some loosening exercises to increase the circulation in the body. So let's stand up. We'll start in samasthiti, alert posture. So the feet 2 to 3 inches apart from each other in parallel. Stand with the spine tall. And let's bring our hands onto our waist. We'll do neck exercises first. Be careful in case of any neck injuries or cervical spondylitis here. Let's inhale, stretch the spine. Exhale, bring the chin to the chest as much as you can, all the way to the chest. Inhale, raise the head back up. Exhale, let the chin and head fall back, face to the sky. Inhale, head to the center. Exhale, chin to the chest. Relax. Inhale, bring the head back to the center. Exhale, let the head go back, stretching the front of the neck. And one more time, inhale to the center. Exhale, chin to the chest. Stretch the back of the neck. Inhale the head to the center. You can smile. And exhale, let the head go back gently. Open the throat and chest. Inhale back to the center. Relax. Good. Keeping the hands on the waist, we'll twist the neck from right to left. Be careful not to jerk the neck. Let's inhale, stand tall. Exhale, turn the chin over the right shoulder. Look all the way over to the right. Feel the stretch in the left side of the neck. Inhale back to the center. Smile. Exhale, the chin over the left shoulder. Feel the stretch in the right side of the neck. Good. Inhale back to the center. And exhale, chin over the right shoulder. Look as far as you can with the eyes. Inhale, back to the center. Breathe in. Exhale, chin over the left shoulder. Look to the left. Good. Inhale, come back to the center. And exhale, relax. Good. Now we'll do trunk twisting to warm up the body and spine. Be careful of any spinal injuries in this warm-up. So let's bring the feet 1 foot apart. Feet in parallel in samasthiti, alert posture. Back is tall. Inhale, take the arms out in front of you, hands parallel to each other.
Exhale, keep the hips where they are. Turn just the upper body to the right. Left palm towards the right shoulder. Look to the right. Good. Inhale, come back to the center. Palms facing each other. Exhale, twist just the upper body to the left. Palm facing the left shoulder. Good. Inhale, come back. Looking forward, palms facing each other. Exhale, twist just the upper body to the right. Look to the right. Left palm to the right shoulder. Good. Inhale, come back to the center. And exhale, twist just the upper body to the left. Right palm towards the left shoulder. Good. Inhale, come back to the center. You can smile. Exhale, relax. Good. Now let's start our yoga asanas, or yoga postures. We'll start with Tadasana, the palm tree posture. If you have any arthritis in the lower extremities, don't raise up onto your ankles in this posture. So for Tadasana, we'll start in Samastiti, feet 2 to 3 inches apart from each other. And inhale, raise the arms up to shoulder height. Exhale, clasp the fingers and push the palms away from you. Good. Inhale, raise the arms up. Exhale here, lengthen the spine. Inhale, come up onto the toes and breathe here. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, grow taller. And breathe out. Slowly lower down the feet. Unclasp the hands slowly with awareness on the body. Lower the arms down slowly. Good. And relax. And now again, let's bring the feet 2 to 3 inches apart. Samastiti, alert posture. We'll take a back bend. If you have any vertigo or back injuries, be careful with this pose. So Ardha Chakrasana, the half wheel posture. Let's take the hands to the waist. Inhale, grow tall. Exhale, slide the fingers back to support the back, elbows in parallel behind the back. Inhale, let the head go back, opening the front of the neck. As you exhale, bend from the lumbar spine, go back carefully and easily as far back as you can. And let's breathe here. Breathe in and breathe out. Breathe in and out. Awareness on the whole body. Breathe in and breathe out. Good. Inhale, lift the chest, come back up. Slowly. Good. And exhale, relax. Good. We'll take a forward bend. Pada Hastasana, the hands to the feet posture. So keeping the feet in parallel, 2 to 3 inches apart from each other. Inhale, take the arms up from the front, all the way up. And exhale, bending only from the hip joint. Keep the legs straight. Start to reach forward. Stretch your fingertips forward till your body is like a table parallel to the ground. And now slowly lower the fingertips down. Either bring the hands to the shins or fingertips to the ground or the palms on the ground if you can. Drop your head towards your knees. Let's take a few deep breaths. Breathe in and breathe out. Keep the legs straight. Breathe in. As you breathe out, head towards the knees. Breathe in. Breathe out. Go a little further. Breathe in. And breathe out. Good. Inhale, slide the fingertips forward. Stretch the arms forward. Let the back come up with the arms. Breathe in slowly. Come all the way up. Smile. Good. And relax. Excellent. And we'll go to the floor. You can just stretch the legs out in front of you. Put your hands behind your back in a relaxed posture. Let the head go back a little. Vishramasana. This is our relaxation pose. And now let's bring the feet together. Toes pointing up to the sky. Hands beside the hips, spine tall. Tadasana. Inhale, lengthen your spine. Good. Exhale, press the hips into the ground. And now we'll do Bhadrasana, the firm posture. So
Be careful in this posture in case of sciatica or arthritis. Let's inhale, bring the feet together, soles of the feet together. Exhale, wrap your hands around your feet. Good. Inhale, sit tall. And exhale, pull the heels as close as you can to the perineum. Relax. If you like, you can even close your eyes here. Breathe in. Exhale, let the knees drop towards the ground. Inhale. And exhale. Inhale. Exhale. Breathe into the whole body. Breathe in. And breathe out. Good. Gently stretch the legs back out. Put the hands behind your back. Recline back just a little. Again, Vishramasana. Let the head fall back a little. Good. And again, we'll come into Dandasana. The toes pointing up. Hands beside the hips. Press down into the ground a little. Lengthen the spine. Breathe in. Exhale. We'll come into Vajrasana, the diamond pose. Be careful of this pose in case of ankle or knee injuries. Let's inhale, bring the right heel towards the right buttocks. Exhale. Inhale, left heel towards the left buttocks. Place the buttocks in the space between the toes and the heels. Hands on the knees. And you can gaze softly downwards or close the eyes. Let's take a few deep breaths with the awareness on the whole body. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. One more breath. Breathe in and breathe out. And when you feel ready, you can open the eyes. Good. We'll take a back bend. We'll take the half camel posture, Ardha Ustrasana. Let's inhale, come up onto our knees. Ooh, that's a relief, isn't it? Okay, and let's bring our hands onto our lower back. Be careful in this pose in case of vertigo or any spinal injuries. So let's inhale here. Bring the elbows towards each other behind the back. Let the head fall back. And exhale, bend backwards from the upper back, arching backwards. Chest to the sky. Breathe in, breathe out. Let the head fall back easily. Breathe in, breathe out. Breathe in and breathe out. One more time. Breathe in and out. Inhale, come back up slowly with awareness on the whole body. Good. Exhale, gently relax. Good. Now we'll bend forward. So we'll take Shashakasana, the hare posture. So be careful in case of osteoarthritis of the knees. You can come out of this posture. Yeah? Inhale, open the knees. Exhale, let's put the hands between the legs. Inhale, lengthen your spine. And exhale, slide forward gently and slowly, all the way, keeping the arms in parallel with each other. Bring the chin to the ground if you can, and relax the whole body. If the chin doesn't want to touch the ground, bring the forehead to the ground and relax. Breathe into your hips. Breathe in. Breathe out. Deep breath in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. One more gentle breath in and out. Good. Inhale, come back up slowly with awareness on the whole body. Breathe in. Exhale, close the knees. Good. And we'll take the stretched up frog posture, Uttana Madhukasana. So inhale, let's take the knees to the side. Again, if this is bothering your knees, you can sit in a different position for this. Yeah. Inhale, take the arms up from the front, stretch the spine, smile, and exhale, bend from the elbows only, the palms onto alternate shoulder blades. Right palm on the left shoulder blade,
Left palm on the right shoulder blade. See if you can keep the chin parallel to the earth. And let's take a few deep breaths. Breathe in. Breathe out. Breathe into the chest. Notice the chest is opening. Breathe in. Breathe out. You can smile. Breathe in. And breathe out. Good. Inhale. Raise the arms up. Good. Exhale. Relax. And you can close the knees. And the moment you've been waiting for, let's slide down onto our mat on our stomach. Come all the way down. Make a pillow with the hands. Turn your head to the right side. Take your feet 2 feet apart or so. Let them splay out to the side. Turn the head. Put it onto the hands. Makarasan, crocodile pose. You're like a crocodile resting in the sun. Let the breath relax. Good. Now bring the legs together. Take the arms out in front of you. You can have them resting on the ground. We'll do Bhujangasana, cobra pose. Be careful of this pose in case of hernia or any abdominal injuries. Inhale, bring the hands underneath the shoulders, elbows close to the body. Exhale here. And inhale, lift the head, chin, chest, upper chest until the navel. And breathe here. Deep breath in. Breathe out. Relax the shoulders. Push them down and back. Breathe in. And breathe out. Breathe in. And breathe out. One more breath in. Come a little higher. And exhale. Slowly lower down. Again, make the pillow with the hands. Turn the head this time to the left side. Legs apart. Makarasan on the other side. Crocodile pose. Resting in the sun. Let the breath relax. Now gently, let's turn onto our backs. Gently roll to the back. Relax. And we'll do Pavan Muktasan, the wind-freeing posture. So inhale, bring the knees up. Exhale, bring the knees to the chest, towards the chest. Inhale, clasp the fingers together, place them on the shins, wrap the arms around the legs. Exhale, bring the forehead towards the knees until the chin or nose touches the knees. Breathe in and breathe out. Deep breaths. Awareness on the whole body. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. One more breath. Breathe in. And exhale. Release the head down. Relax the legs. Slide them down onto the ground. Let the legs be 1 to 2 feet apart. Let the toes fall out to the sides. And the arms by your sides. Palms facing up to the sky. Relaxing the arms on the ground. Shavasana or corpse pose. Relax the whole body. Become aware of the natural flow of the breath. And let's take our attention to our toes and feet, ankles, legs, knees, thighs, and hips, our abdomen,
stomach, chest, shoulders, right arm and hand. Eyes are closed. Left arm and hand. The neck and the throat. The head and face. Eyes. The top of the head. The whole body. The whole body. Slowly and gradually, take a deep breath in and breathe out. Let's turn and rest on our right side for a moment, resting on the right side. Slowly and gently, come all the way back up to a comfortable, easy seated position. You can sit cross-legged if you like, or in lotus or half lotus. Sit with the spine tall. And we'll practice some breathing techniques or pranayama. So with the spine tall, let's bring our hands into Gyan Mudra. A mudra is a hand position that directs the flow of prana or energy in the body. So index finger and thumb are lightly touching, and the backs of the hands resting on the lap. Good. We'll do Kapalabhati breathing. So in Kapalabhati breathing, we'll be forcefully contracting the abdomen, and the air forcefully shoots out of the nose like this. In Kapalabhati breathing, after we contract the abdomen and the air comes out of the nose, the inhalation happens on its own. Okay? We'll take 20 repetitions of Kapalabhati breathing. So let's close the eyes. Take a deep breath in through the nose. And we'll take 20 rounds of Kapalabhati. Let's begin. Relax. Let the eyes closed. Relax the hands. Notice the energy or prana in the body, all over the body. When you feel ready, you can open your eyes. Good. And we'll do Nadi Shodhana Pranayama, or alternate nostril breathing. So let's bring the left hand into Jnana Mudra. Index finger and thumb lightly touching, other three fingers extended. Rest the left hand on the knee, left knee. And the right hand, let's take it into Pranayama Mudra. So you'll bring the index and middle finger towards the palm and place the right thumb on the right nostril. Close the nostril. And exhale out of the left nostril. Close the eyes. Good. Inhale through the left nostril. Close it with the ring finger. And exhale out of the right nostril. Good. Inhale through the right. Close the nostril with the thumb. Exhale out of the left.
Inhale through the left. Close with the ring finger. Exhale out of the right. Inhale through the right. Close with the thumb. Exhale out of the left. Inhale through the left nostril. Close with the ring finger. Exhale out of the right. One more. Inhale through the right. Close with the thumb. Exhale out of the left. With the eyes closed, relax the right hand in the lap. If you like, you can bring it into Gyan Mudra. Relax the hands. And notice the balance in the body and the balance between the right and left hemisphere of the brain. And when you feel ready, you can gently and slowly open your eyes. We'll do one more pranayama, Brahmari pranayama. So let's bring again the hands into Gyan Mudra, index finger and thumb lightly touching. In Brahmari pranayama, we'll be making the sound of a bee, a humming sound like this. We'll do this with a special mudra called Shanmukhi mudra. We'll be closing off all of the senses. Yeah? So let's bring the hands towards the face. Shanmukhi mudra, we close the eyes, gently touch the index fingers onto the eyelids, and then the middle fingers onto both sides of the nose without closing the nostrils. The ring finger above the lips, right below the nose, and place the pinky finger right beneath the lips. And we'll be, in a moment, closing the ear flaps with the thumbs. And we're going to be taking deep breaths in and breathing out with the humming sound 3 times. So let's go ahead and close the ear flaps with the thumbs. Take a deep breath in. And breathe out with a humming sound. Deep breath in. Again with the humming sound. One more time. Deep breath in. Breathe out. With the eyes closed, relax the hands in the lap. We'll be practicing dhyan or meditation. You can keep your eyes closed and bring the hands into dhyan mudra, which is into the center of the lap. Bring the right hand into the center of the lap, palms facing up, and the left hand into the center of the lap, and bring the right hand on top of it, both palms facing up. The palms are stacked. And with the eyes closed, let's take a deep breath in and breathe out. Relax the shoulders. Take a long, deep breath in. As you breathe out, feel the weight of the body dropped onto the ground where you're sitting. Become aware of the whole body. And become aware of all the sounds around you. Any sounds that you hear, notice them. And let the sounds be there as they are.
You are in harmony with the environment as it is. Take a deep breath in and breathe out. Become aware of any thoughts that are floating through the mind. Do not resist any thoughts. Let them come. Now you are in harmony with the thoughts, with the mind. And become aware of any feelings, pleasant or unpleasant. Accept the feelings as they are. You are peace. You are joy. Breathe in and let go. Again, become aware of your feelings. Become aware of your thoughts. Become aware of your whole body. And let's immerse ourselves in the sounds. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्ति 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 Take a deep breath in and breathe out. A long, deep breath in and breathe out. Become aware of your whole body and where you're seated on the earth. Breathe in and breathe out, and slowly and gently, when you feel ready, you can gradually open your eyes. Good. Namaste. Om Shanti Shanti Om, everyone. What an uplifting and revitalizing yoga session we've had. And the sun even started to come out even more, shining its rays upon us so gloriously.
We're here in this beautiful north lawn of the United Nations headquarters in New York City, celebrating World Yoga Day 2023. A sincere thank you, Annalise Richmond, and to all our young yoga practitioners who've helped to demonstrate during this yoga session. We have an unforgettable event with them and for the youngsters in the first row leading us as well this morning. One more round of thanks to them as they exit the stage and take their leave. Namaste. Namaste. Have a beautiful day. Our deepest gratitude to the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, for gracing us with his presence and in creating this wonderful memory at the iconic United Nations headquarters that we cherish from years to come. Friends, I am going to ask if you can please stay in your seats. Please remain seated while the Honorable Prime Minister of India meets and greets participants. The Honorable Prime Minister will meet and greet participants. May I ask for your cooperation and your understanding. Friends, may I ask that you remain seated at your yoga mats, please, as the dignitaries and His Excellency Prime Minister Modi ji meets and greets and mingles with some people. Excellencies and friends, I have some incredible news to share. A Guinness World Record is created today. Today we have gone for a Guinness World Record now in the books. It's a world record for the most nationalities in a yoga lesson. The most nationalities in a yoga lesson right here at New York UN headquarters. Big congratulations to all of us for being part of this historic event. To share more details and conducting this formal proceeding, I'd like to have the Guinness World Records official adjudicator, Mr. Michael Emprick, to the stage. I'm going to ask people to please remain at your mats. Please allow His Excellency. Namaskar. Then, I've just paid respect to the brave UN peacekeepers. In 2015, I had called for a new memorial to be built at the UN in their memory. And last week, the whole world joined hands with India to make this reality soon. As the largest troop contributing nation, we are grateful to all nations for their expression of support to this noble cause. Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate
2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They You join on the stage. Energetic youngsters Leading us. We're going to along with prepare Mr. the stage Richmond so that in we this can get it lesson. ready And we for our yoga lesson. उन्होंने बताया है, प्रधानमंत्री ने साफ साफ बताया कि योगा जनता को, जिसे काफी लोगों को यहाँ खुशी मिली कि योगा में कोई कॉपीराइट की जरूरत नहीं होती, कोई पेटेंट नहीं होता, योगा में कोई रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती, योगा हर किसी कोई भी इसको अडेप्ट करके अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। तो ये प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कही है जो कॉमन मैन को, एक आम आदमी को भी भाती है, क्योंकि काफी कॉपीराइट से लेकर हर चीज में कॉपीराइट और रॉयल्टी देने की बात होती है, पेटेंट दे लेने की बात होती है, तो ये मुश्किल की घड़ी होती है। लेकिन योग ऐसा प्राचीन भारतीय परंपरा है, प्राचीन भारतीय संस्कृति का हिस्सा है जो आज भी भारत में चल रही है। वो प्रधानमंत्री ने दुनिया को यही संदेश और संकेत दिया कि इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई पेटेंट नहीं है, कोई रॉयल्टी नहीं है, ये एक फेस्टिवल है योगा। और आज जो उत्सव मना रहा है, पूरी दुनिया मना रही है इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर, ये भी बहुत बड़ा मौका है इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करने का। योग एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसा हिस्सा जो कि आम जनता, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सब के भेदभाव से परे, चाहे धर्म संप्रदाय जाति से परे, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कभी भी कोई भी इसको अडॉप्ट कर सकता है, इसमें जी सकता है, इसको आत्मसात कर सकता है। इसके लिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन को भी प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया है। और अंत में जो मैं बार बार जो कह रहा था कि जो प्रधानमंत्री ने अपनी शुरुआत के दिनों से ही स्टे फिट और स्टे हेल्दी का नारा दिया है, वो स्टे फिट और स्टे हेल्दी को उन्होंने अपने संस्कृत की भाषा में सर्वे सुखिना भवंतु की बात की। उन्होंने कहा कि सब लोग खुश रहें और सब लोग स्वस्थ रहें। ये प्रधानमंत्री ने इन दो लाइनों के साथ अपना भाषण समाप्त किया था। और यही सबसे बड़ी बात है कि जो वो भारत में संदेश देते रहते हैं कि फिट रहो, स्वस्थ रहो। यही यहाँ भी उन्होंने कहा कि दुनिया में हर कोई स्वस्थ रहे, दुनिया में हर कोई खुश रहे, यही उनकी कामना है। और ये योग जो है, ये इन दोनों चीज़ों को दिखाता है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को योग करते हुए, भीड़ में प्रधानमंत्री हिस्सा बन चुके हैं और योग करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आपको ऐसा ही योग करते प्रधानमंत्री योग गुरु मंच में बैठे हैं काफी सारे, और वही बताएंगे 1 घंटे में जो भी वो योग ये मुद्राएं करेंगे, वही सामने की पूरी जनता दोहराएगी। पूरी तस्वीरें साफ हैं। इसके बारे में बताया भी जा रहा है कि कौन सा योग किस समय किया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि योग के बहुत ज़्यादा योग का जो प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ योग है, इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है सेल्फ कंट्रोल, जिसे योग की भाषा में जो पतंजलि का योग शास्त्र है उसमें साफ लिखा था, ये सेल्फ कंट्रोल, ये प्रैक्टिस होती है जिसमें नॉन वायलेंस भी आता है, सच बोलना भी आता है, चोरी नहीं करना, इज्जत के साथ रहना, मतलब बुरी चीज़ों को अवॉइड करना। ये सेल्फ कंट्रोल का बहुत बड़ा हिस्सा है जो योग दिलाता है। दूसरी, ये जो ओम का नारा है, ओम जो कहना है, ओम मन को मानसिक शांति देता है, इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए, माइंड को कंट्रोल करने के लिए ये ओम बहुत ज़रूरी होता है। तो सेल्फ कंट्रोल के बाद जो नियम है, जो ऑब्जर्वेंस है, उसका एक बड़ा हिस्सा ओम होता है, जिससे आत्मा पे जिस सेल्फ कंट्रोल से प्योरिटी आती है, आत्मा स्वच्छ रहती है इस ओम से, इससे सादगी आती है। और ओम वेद का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, डिवोशन, भगवान के प्रति आदर देने का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ओम रहा है। तो ओम सिर्फ एक धर्म या किसी जाति और संप्रदाय का प्रतीक नहीं है। ओम आत्मा को भगवान से जोड़ने का प्रतीक माना जाता है। यही योग का एक बहुत बड़ा नियम है। यही चीजें यहाँ से संदेश प्रधानमंत्री देते हैं। प्लीज आप सब लोग खड़े रहें। ओके, तो सभी लोग, जितने भी लोग शो का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हुआ। तो प्लीज अपने अपने जगह पर आए। वंदे मातरम, come on everyone, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर। लगभग 24 मिनट तो गुजर गए, लेकिन ठीक है। अमेरिका की यात्रा, प्रधानमंत्री की आज योगा दिवस, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगा दिवस के उपलक्ष्य में हमने आज योगाचार्य, जो हमारे कभी पैनलिस्ट भी हैं, हमारे आते हैं, आज मैं उनका चाहूंगा कि अंकित जी उनका सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। योगा की पूरी, मैं आज एक काम करता हूं सबकी इजाजत के साथ कि मैं तारुफ नहीं, परिचय नहीं करा रहा हूं। सारे लोग वेल नोन है और सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं। शो को मैं जल्दी से शुरू करना चाहता हूं, और वो ये कि योगा को लेकर पूरे देश दुनिया में चर्चा। 180 मुल्क शीर्षासन कर रहे हैं, तो कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है कि कल जो मैं शो कर रहा था उसमें योगी जी की मोदी जी की अमेरिका यात्रा को लेकर विरोध था, उससे पहले गीता प्रेस को लेकर विरोध था। आज कम से कम इसका तो श्रेय दिया जा सकता है रितु जी कि मोदी जी ने पूरी दुनिया को शीर्षासन करा दिया। इसमें तो कोई विरोध नहीं होगा ना आपका? नहीं, मोदी जी फिर योग का काम संभाल ले और बाबा रामदेव को प्रधानमंत्री बना देते हैं। मणिपुर का देख लेंगे वो कि मणिपुर चल रहा है पिछले 1.5 महीने से, उत्तराखंड चल रहा है, महाराष्ट्र चल रहा है, तो इस चीज में कौन देखेगा? अच्छा, आपको खुश करना बहुत मुश्किल है, बड़ा फिर कोई मुझसे कहेगा कि ये खुश करने की बात ही नहीं है। बात तो सच तो यही है ना कि शीर्षासन तो 180 मुल्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी, मैं खड़ा करना चाहता हूँ। शीर्षासन तो नेहरू जी ने तभी कर लिया था जब आजादी मिली थी। अभी कौन सा ऐसा नया काम कर दिया? ये तो भारत की पहचान है। अरे आप, भारत जल रहा है, आप उसे संभालने के क्या बोलेंगे जो बाइडेन को? जो बाइडेन बोलेगा और केम छे तो क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र जल रहा छे, उत्तराखंड जल रहा छे, मणिपुर जल रहा छे। एक मिनट, मैं आपसे बस एक सेकंड चाहता हूँ। जी जनाब आली, कहना चाहता हूँ, अच्छों को पड़ गया दौरा, क्योंकि एक चाय वाला कर रहा है अमेरिका का बार बार दौरा। अरे इधर आजा भैया। अरे 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 अरे, तूने तो ऐसा कमाल कर दिया है। हाँ जी, फिर से बोलो। अच्छों को पड़ गया दौरा, क्योंकि एक चाय वाला कर रहा है अमेरिका का बार बार दौरा। कईयों की आंख खुल गई, कईयों की हो गई नींद हराम। कईयों की आंख खुल गई, कईयों की हो गई नींद हराम, क्योंकि ये मोदी जी का पचा नहीं पा रहे हैं। भारत की साख को जिस तरीके से इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया, आज मोदी जी विश्वगुरु की ओर बढ़ रहे हैं। केवल इस बात का जवाब, ये वही मोदी जी है ना जिनको अमेरिका वीजा नहीं देता था जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। ये देश के प्रधानमंत्री है जो गए अमेरिका। मोदी जी को वीजा भी नहीं मिलता था उनके समय में। जी जनाब आली, कहाँ से आना हुआ? जी, मैं दरभंगा बिहार से हूँ। दरभंगा बिहार से, जी जनाब। तो मैडम, तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। भारत की पहचान 1 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक किस चिड़िया का नाम था? सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था। किस लिए? शिक्षा और संस्कार। तो मोदी जी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पहचान उससे ही है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष के बारे में मेरा एक छोटा सा, आप ध्यान से सुनना। आज का जो विपक्ष है वो उस केकड़े की तरह है कि दुनिया के 180 देशों ने कहा कि अपने अपने देश से केकड़ा मंगाओ, लेकिन डिब्बा बंद होनी चाहिए। तो सभी देश ले गया, इंडिया वाला खोल के ले गया। तो बोला खोल के क्यों लाया? तो क्योंकि ये इंडिया का विपक्ष है, क्योंकि जो आगे बढ़ेगा उसको पकड़ के आज शो होता तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। कहाँ से आना हुआ आपका? गाजीपुर उत्तर प्रदेश। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से मैं आया आपके पास। रुके इधर हो, है ना, कोई बात नहीं। ऐसा थोड़ी ना खाना नहीं हजम होएगा। नहीं बोल पाया हूँ, मतलब गजब है आदमी। कविता भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। अरे अभी नए नए प्रवक्ता बने हो, थोड़ा हल्के में, पहले ही चौथा गियर डाल दोगे। जी जनाब आली। देखिए, 170 देश बेशक आज शीर्षासन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का आज भी कहीं अता पता नहीं है। ना ट्विटर पे है, ना देश में है, कोई नहीं जानता। खुद पार्टी प्रवक्ता से पूछ लो, अगर इनको पता हो तो कहाँ है। आगे देखना है ये क्या हो रहा है। सर आप प्लीज इनको रोकेंगे। अब दूसरा एक चीज बताइए, योगा आमतौर पर कब करते हैं? सुबह को करते हैं ना। अब आदमी उठता ही 11 बजे हो तो वो क्या ही योगा का महत्व समझेगा? बताइए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार कहते हैं। और कमाल की बात तो ये है, जब तक आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी सोकर उठे होंगे, जब तक इस देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में 11 मीटिंग कर चुके थे। बनना इनको प्रधानमंत्री है
और बेसिक काम नहीं करेंगे। अब मैं आगे आता हूं। इन्होंने कहा कि भाई मणिपुर की दिक्कत है। मैं मानता हूं कि देश की जो आंतरिक दिक्कतें हैं उस पर भी सवाल जवाब होना चाहिए। इस देश के गृह मंत्री वहां पर पहुंचे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सारी चीजें हैं। लेकिन अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट्स दोबारा गए हैं दूसरी बार, और ऐसा पहली बार होगा कि हिंदुस्तान के इकलौते और दुनिया के इकलौते ऐसे आदमी हैं, छोड़कर नेल्सन मंडेला और विंस्टन चर्चिल को, कि जिन्होंने यूएस हाउस को दोबारा एड्रेस किया है, तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? ये तो हिंदुस्तान से ही है ना। आया मैं जरूर आया। मैं शिवम त्यागी जी का एक बात पे स्वागत करना चाहूंगा विशेष तौर से, क्योंकि यहाँ पे जो लोग जिन्होंने डिबेट शुरू करी इस जगह से, और इस डिबेट से शुरू करने के बाद वो राष्ट्रीय प्रवक्ता तक या प्रवक्ता या पार्टी में पहुंचे, उनमें से एक शख्स ये भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। जी पांडे जी मौजूद है, प्रभात पांडे जी जवाब देंगे, एंड देन आई एम कमिंग टू यू। जी नहीं, सबसे बड़ी बात है, हमारे भाई ने कहा कि गृह मंत्री जी वहां सभा कर रहे थे। पता है क्या बोला उन्होंने? एक पत्रकार ने सवाल कर दिया तो उस पत्रकार को कहा जाता है कि माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा कि यूपीएससी से पास होकर के आओ फिर सवाल करना। ये भी मैं देख रहा था, तो ये इनको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात कि अभी जो आप कह रहे हो ना, मैं बड़ा अच्छा सुनाया, मैं भी ये 2 पंक्ति सुनाई। अरे आप तो कवि हैं, सुना ही दूं। अजीब पसोपेश में हूँ, अजीब पसोपेश में हूँ, मैं एक अलग देश में हूँ। हादसों का होना यहाँ आम हो गया है, और पुल बनाना घड़ी बनाने से आसान हो गया है। हादसों का होना यहाँ आम हो गया है, पुल बनाना घड़ी बनाने से आसान हो गया है। और सबसे बड़ी बात जो इस देश में चल रही है, विचित्रता देखिए इस देश की, कि हमारा देश, मोदी जी, अरे पतंजलि भी एक बार बोल लेते ना प्रभु। पतंजलि के नाम से योगा जाना जाता है, मोदी जी के नाम से नहीं। तो मोदी जी का नाम बदल के पतंजलि कर लो पतंजलि, आप तो नाम बदल। आज वैसे तो मैं ये मानता हूं, यह थोड़ी है, वैसे तो ये मैं मानता हूं जो कवि होता है उसका हृदय जो होता है बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा विशाल हृदय होता है। लेकिन आज प्रभात जी आपके चेहरे पे संकुचिता दिख रही थी मुझे, कि कहीं अरे पतंजलि और मोदी से क्या तुलना है तुम्हारे? चल रहा है मणिपुर, नहीं तो पतंजलि और मोदी से तुलना क्या? क्यों ना मैं हो जाऊं आतंकित, क्यों ना मैं भयभीत होऊं कि पतंजलि देखिए, इनका मानसिक दिवालियापन देखिए। 5000 साल की सभ्यता, 1000 साल से हम योग कर रहे हैं और इनको पतंजलि दिखाई दे रहा है। मतलब इनको मार्क जकरबर्ग अगर दुनिया में किसी और देश का कुछ आदमी जो है वो पैसा कमा ले तो वो एकदम बढ़िया है, लेकिन अपने देश का बिजनेसमैन अगर पैसा कमा ले तो ये कांग्रेस वालों को दर्द अलग से क्यों हो जाता है। और अब मैं एक और चीज अंत में कहना चाहता हूं, सुनिए, हम मणिपुर पर भी जवाबदेह हैं, और हम अगर इस दुनिया में जाकर मेरे देश के प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कर रहे हैं और देश के लिए कर रहे हैं तो इनको भी थोड़ा खुश हो जाना चाहिए। गाली तो नहीं दे रहे ना राहुल गांधी की तरह जाकर वहां पर, जैसे अभी पिछले दिनों अमेरिका में वो जाकर दिए थे। जब कह रहे थे प्रधानमंत्री जी जन्म लेने में शर्म आती है, वो क्या था जवाब दीजिएगा त्यागी जी। लेकिन पहले जी मैं आ रहा हूँ, वन बाई वन मैं सबको मौका देना चाहता हूँ। जी जनाब, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी, ताली तो बजा दो भाई। और अभी चमत्कार देखना जी। अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो किसी का व्यक्तिगत सम्मान है, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। अगर ये व्यक्तिगत सम्मान होता तो मोदी जी को 2005 में अमेरिका बैन करने का कार्य नहीं करता। नंबर 1। नंबर दो, मैं प्रधानमंत्री जी को और भी मुझे अच्छा लगता और खुशी होती अगर वो अमेरिका जाने से पहले आज भारत माता का आंचल जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, हिंदुस्तान की बेटी उन्हीं के सांसद से इंसाफ मांग रही है, अगर उसके बारे में भी 2 शब्द बोल देते। आज किसान अपने एमएसपी के मांग के लिए धरने दे रहे हैं, अगर उनके शब्द भी 2 शब्द बोल देते तो मुझे भी खुशी होती। मैं मोदी जी से 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। रुको भाई, आ रहा हूं। अरे रुको, अमेरिका जाने से पहले अपनी तारीफ करने के लिए लगभग 3 बिलियन से ज्यादा उन्होंने ठेका देने का कार्य किया अमेरिका को। उससे हिंदुस्तान का क्या फायदा हुआ? मेक इन इंडिया का जुमला कहां गया? क्या अब पाकिस्तान के अंदर पीओके के अंदर यूएस एम्बेसडर नहीं जाएंगे? क्या पाकिस्तान को फाइटर देना या औजार देना बंद कर देगा अमेरिका? आज ये सवाल है। जो एक तो बड़ी मुश्किल है ये शो जो है भैया जी कहीं, उसमें अगर रट के कोई आया तो कविता भूल जाता है, और रट के कोई आया तो भूल जाएगा, पक्का भूल जाएगा, क्योंकि ये डिबेट ही नहीं ऐसी है। एलन मस्क का नाम सुना आपने? एलन मस्क का सुना? जी प्रदीप जी देखिए, इनको तो माफ कर देना चाहिए, इनका भूलना बहुत जायज है, क्योंकि वही अद्धा पहुआ एक के साथ एक फ्री वाली पार्टी से है। नहीं
इनका चाल चरित्र और चेहरा दिखा रहा है। आज हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है, हमारे यूएस वीजा जो है बंद हो गया, 2-2 साल वेटिंग है। अमेरिका यूएस एम्बेसडर क्यों नहीं अपॉइंट करता? मोदी जी क्या बाइडेन से जाकर इसका पूछेंगे? आज ये जवाब सवाल जायज है। जी मैं भी कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी से मेरी एक सवाल है। नहीं रुको, आम आदमी पार्टी से सवाल है, यहाँ खड़े हो पहले आराम से। मैंने हाँ जी, 3 मिलियन में कितने जीरो होते हैं उनसे क्या जीरो कितने होते हैं 3 मिलियन में? 3 बिलियन में? अरे तुम इतना मुश्किल सवाल पूछते हो। रुको, आ रहा हूँ, रुको। मैं अभी कुछ कहना, एक ही ऑटो वाला पूछेगा या ये पूछ ले जब तुम पूछ लो। मैं कुछ कहना अभी भूल गया था, इन्होंने मैडम जी ने थोड़ा डिस्टर्ब भूल गया। मैं याद है, मैं वही बोलना चाहता हूँ। इलॉन मस्क जी ने कहा कि मैं कौन? इलॉन मस्क, मेरे पास आओ। इलॉन मस्क जी ने कहा कि मैं, हो सकता है इसने एलन मस्क को एलॉन मस्क कह दिया हो, लेकिन बजाओ ताली इसके लिए सब लोग। पूरे दिल्ली में हाड़ तोड़ मेहनत करता है और तैयारी करके आता है डिबेट की। एक बात बताएं तुमसे, खरगोश और कछुए की कहानी बिल्कुल तुम सही होती तुम्हारे ऊपर। खरगोश को दौड़ने दो, लेकिन एक दिन कछुए का नाम जरूर लिखा जाएगा, और आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों विधायक तुम जरूर बनोगे, जरूर बनोगे। कोई ताकत रोक ना पाएगी। हाँ, तो एलन मस्क ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी का फैन हूँ। वो गाड़ी बनाते हैं अमेरिका में और मैं गाड़ी चलाता हूँ, ऑटो चलाता हूँ, और हम दोनों के बीच में इतना बड़ा दुनिया बसा हुआ है, देश बसा हुआ है। मैं भी तो मोदी जी का ही फैन हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे देशवासियों, मैं एक बात कहता हूँ, क्या कविता लिखी इस आदमी ने, अद्भुत कविता। बोले वो गाड़ी बनाते हैं, मैं ऑटो चलाता हूँ। वो सबसे बड़े आदमी है, मैं सबसे कमजोर आदमी हूँ। इसी के बीच में तो सारी दुनिया है। अद्भुत। मैं तुम्हारे चरण पकड़ लूं, चरण, तुम्हारे चरण पकड़ लूं। अद्भुत, 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 वंडरफुल, वंडरफुल। जी, नाउ यू प्लीज रिप्लाई। देखिए, एक डाक देलवी साहब का बड़ा मशहूर शेर था कि खूब पर्दा है चिलमन से लगे बैठे हैं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। वहां जाकर के, विदेश में जाकर के चला दो इसको चिलमन को, ना तो वो झाके ना हम झाके। नहीं, इसीलिए कह रहा हूं। अब देखिए, विदेश जाकर के गांधी जी की प्रतिमा के सामने अपने आप को सेकुलर दिखाने की तमाम कोशिशें माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनसे बड़ा सेकुलर का झंडा बरदार, फरमा बरदार कोई है नहीं विदेश में। और जैसे ही भारत के अंदर आते हैं, ऐसा महसूस होता है कि मेजोरिटी के सबसे बड़े झंडा बरदार, फरमा बरदार माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ही हैं, उनके सिवा कोई है नहीं। भाई, अकलियत की तरफ भी देखो, अकलियत के ऊपर यूएस। अच्छा, मुझे बताओ क्या परेशानी है अकलियत को? मैं बता रहा हूँ, माइनॉरिटी का बजट कितना कम कर दिया गया साहब। एक तरफ तो कहा जाता है कि पढ़ो प्रदेश और पढ़ो बेटियां करके एक स्कीम चलाई जाती है, वो काट ली जाती है। फिरोज अहमद बख्श यहीं बैठे हुए थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप काट ली गई बच्चों की, एजुकेशन का बजट काट लिया गया, स्वास्थ्य का बजट काट लिया गया, और जवाबदेही नहीं बनती वहां जाके झंडा। जनाब आली फिरोज बख्श साहब, फिरोज बख्श साहब, मैं आ रहा हूं। फिरोज बख्श साहब विल आंसर। मैं आपका जवाब दूंगा। इससे पहले कहना चाहूंगा, शुरू में आपने कहा प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं, हम दिल्ली में हैं। आम आदमी के मेरे भाई यहाँ खड़े हैं, जहां इनके चीफ एक पूरे कर, भूल जाता है आदमी, भूल जाता है। अरे, जहां इनके चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली को शराब में सराबोर किया, मोदी ने अमेरिका को नहीं पूरी दुनिया को योगा में सराबोर कर दिया। पहली बात, जनता ने एक बार सुनिए, आपको एजुकेट कर रहा हूं। अरे रुको, जनता ने मोदी जी को क्या नारा दिया? मोदी है तो बोलो, वंडरफुल। और मैंने मोदी जी को क्या नारा दिया? सुनो, मोदी जैसा दमदार, दिलदार, जानदार, शानदार, वफादार, वफादार, कामदार एंड अबव ऑल ईमानदार वजीर आजम ना आया है ना आएगा। बोल, ठीक है। अरे मैं हिंदुस्तान का वफादार हूं, मैं किसी का वफादार नहीं हूं। मोदी मेरा वजीर आजम है, मैं उसको लाइक करता हूं। और सुनिए, आपने क्या, आपके प्रधानमंत्री ने, अरे कांग्रेस ने 75 साल। मुझे मालूम है, आप आइए, इधर आइए। चावला साहब आज आए हुए थे। चावला साहब, मैं आपका स्वागत करता